Welcome everyone to Life Simplified live session. Welcome, just waiting for people to log in. Okay, so today we are going to talk about transforming despair to hope. How to transform the energy of despair to hope. अभी जिस टाइम से हम लोग सब गुजर रहे हैं, the times that we are all going through, I'm sure many of us are having sometimes thoughts of despair. डिस्पेयर यानी कि द फीलिंग ऑफ लॉस कि पता नहीं मेरा क्या होगा, आगे कैसे होगा. सो डिस्पेयर इज बेसिकली द एनर्जी वेयर वी लूज होप, वेयर वी फील दैट एज इफ एवरीथिंग इज जस्ट broken down, as if सब चीज खत्म हो गई है, as if सब there is a feeling of worthlessness. So इस ये जो एनर्जी होती है जहाँ पे हमको ऐसा फीलिंग आता है कि as if everything is lost, everything is broken down or everything is finished, and then अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि there is no hope left. So normally this feeling often comes when we have tried many things in life. जैसे सपोज आपका कोई टारगेट है या आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, एंड यू हैव ट्राइड वेरियस मीन्स और वेरियस एफर्ट्स टू अचीव दैट टारगेट. अब बहुत कुछ करने के बावजूद भी अगर हम लोग का वो टारगेट मीट नहीं होता है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ रिलेशनशिप टारगेट और इट कुड बी अ हेल्थ टारगेट, इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वो कोई भी तरह का एम हो सकता है, इट कैन बी एनी एम. But often what happens is, if we find it difficult, or if we keep losing it, or if we keep on failing, then at some point of time अंदर से हम लोग के अंदर जो एक होप की फीलिंग होती कि yes I can still do it, और yes it can still happen, sometimes it kind of fades away. या वो वाली जो फीलिंग है, एक स्ट्रेंथ की जो फीलिंग है, होप की जो फीलिंग है, कभी कभी वो फीलिंग फेड अवे हो जाती है. एंड द अंडरलाइंग रीजन फॉर दैट इज व्हेन वी गो थ्रू maybe circumstances. So इसके reasons क्या है? डिस्पेयर जब हमारे लाइफ में आता है तो ये डिस्पेयर के पीछे what is the root cause? So the root cause basically are 2-3 factors. Number one, it comes because we have not achieved a particular target. उसके वजह से अंदर से एक hopelessness की feeling आती है. Second, it happens when we have unexpected crisis. कुछ unexpected suddenly आपके साथ हो गया, suddenly a business loss, or maybe suddenly a loss of a family member, or suddenly maybe a loss of something else. So कोई एक suddenly जब कुछ एक loss आ जाता है या एक unexpected कोई एक event हो जाता है, then the feeling of hopelessness comes कि no, how will I come out of it, or it is not going to happen. So, or these are two reasons. Another reason why despair can happen या hopelessness या worthlessness की feeling आ सकती है if you have been rejected big time. अगर आपको लोग बहुत रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर एनी रीजन, मे बी फॉर योर बिजनेस प्रपोजल, और मे बी पीपल आर रिजेक्टिंग यू मैनी मैनी टाइम्स इन रिलेशनशिप्स, या हो सकता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं इन योर रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस या कोई भी चीज को लेकर के. सो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक होपलेसनेस की फीलिंग या एक वर्थलेस फीलिंग, और दैट फीलिंग दैट आई एम नथिंग, और आई you feel that as if everything is shattering, as if चीजें बिखर रही है, या खुद के अंदर खुद का जो विश्वास है, खुद के ऊपर जो एक होप होना चाहिए, that hope is kind of fizzling away. So now we're going to discuss कि इस फीलिंग से अगर if at all ये फीलिंग हमारे लाइफ में आती है, या हमारे लाइफ में या किसी और के भी लाइफ में आसपास में, इसको हम लोग कैसे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं? How can we transmute this feeling of despair to hope? Okay, so I'm just going to share some tips which has personally helped me, and just sharing so that it might help you all, because everybody has gone through events like this, including me. So we all go through phases like that or events like that. So what I normally feel, or I normally recommend कि जब इस तरह की कोई situation आती है, this is the time where we need to remind ourselves. Number one, remind ourselves of the good things that we have done. Number one, अपने आप को याद दिलाइए कि क्या आपके अंदर अच्छा है. रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट योर स्ट्रेंथ्स कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन से स्ट्रेंथ्स के ऊपर मैं खड़ी हो सकती हूँ. अ वेरी गुड रिमाइंडर ऑफ टेलिंग योरसेल्फ और रिमेम्बरिंग व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आई हैव. अक्सर क्या होता है कि जो चीज हमारे हाथ से चली गई है, और समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट, और समथिंग दैट हैज गॉन अवे, we lose hope because we feel as if सब कुछ चला गया है. So हम लोग का जो माइंड है उसको कहीं ना कहीं से एग्जैजरेट कर देता है या उसको स्ट्रेच कर देता है. Okay, now it has happened, maybe you have had your failure, or maybe you've had your
despair related to one or two subjects only. बट हम लोग का जो माइंड होता है, हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, कभी कभी क्या करती है, उसको इतना ज्यादा स्ट्रेच कर देती है, तो माइंड सोचने लगता है कि देयर इज नो होप लेफ्ट फॉर एनीथिंग. Okay, now one thing I would like to share, one of our acharyas, one of our senior masters, she would often say that for every problem there are 100 solutions. For every problem there are 100 solutions. And master very beautifully says one thing, that while the purpose is fixed, the plan is flexible. I repeat, master का एक बहुत अच्छा quote है where he says the purpose is fixed but the plan has to be flexible. So personally I feel whenever we feel stuck or we feel as if हमारे अंदर कोई hope बची नहीं है, this is the time you need to remind yourself to be like water. I repeat, this is the time you need to remind yourself to be like water. Now water क्या करता है? वाटर को कहीं पर अगर बहना है, वो एक जगह आके अगर स्टक हो जाए, इट डजंट फील स्टक, इट फाइंड्स अनदर वे आउट, अनदर वे आउट, अनदर वे आउट, अनदर वे आउट, और वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है. इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग. The water constantly flows with a lot of hope inside, with a lot of strength inside, and especially a lot of hope inside कि okay, इस साइड से मुझे रास्ता नहीं मिलेगा तो इधर से मुझे रास्ता मिल जाएगा, इधर से नहीं मिलेगा तो उधर से मिलेगा. So the water is constantly flowing, trying to find the end result. Many times जो रास्ता हम लोग पकड़े हैं, उस रास्ते पे जब हम लोग स्टक हो जाते हैं, उस रास्ते पे जब हम लोग को लगता है कि हम एक गलत रास्ते पर आ गए हैं, we kind of lose hope. And when you lose hope, you will just feel कि okay, सब खत्म हो गया, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है. That is the time you need to remind yourself that ये वाला सिर्फ प्लान खत्म हुआ है. You can always try again for another plan. Try again for another plan. And definitely not lose hope in the process. अगर आप होप को ही छोड़ देंगे, then you will not be able to attract a new plan. And you will often see कि अगर एक रास्ते से आपका प्लान या आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, whatever kind of target it might be, अगर एक रास्ते से वो नहीं मिला है आपको, you try another way, but don't lose hope. Never lose hope. So one of the best ways of whenever you feel stuck, one of the best ways, in fact, is to remember and to remind yourself that it's okay, ये वाला रास्ता नहीं click हुआ, let me try another route, let me try another way, and let your purpose be fixed. Purpose अगर fixed है, उसके प्रति जो आपका plan है, plan can be flexible. Plan को आप change करते रहिए. In fact, मास्टर यही बोलते हैं कि we need to be like water, constantly adjusting and constantly being flexible. So flexibility and adjustability is very important, and definitely the added punch or the added ingredient is of hope, is of strength. So you can constantly pray for the energy of hope and tell yourself कि नहीं, हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, not giving up. So make sure that even in times of complete despair, we find some hope or some shining light, but you have to make an effort and open your mind to find it. In fact, आप देखिए कि जितनी भी major scientific discoveries होती है या जितने भी major theories आती है world में, it all happens when somebody at some point lost all the hope, lost all the resources, but still stood up and had another ray of hope कि it's okay, I will try again. इनफैक्ट वो जब मोमेंट्स होते हैं जहां पे आपने सब चीज ट्राई कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिर से खड़े होकर के फिर से ट्राई करते हैं विद इमेंस होप इनसाइड कि इट्स ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई अगेन, many times you will experience that try will actually become your most successful try. Okay, so this normally happens because when you have lost all the hope, you have lost everything, sometimes that is a time, unfortunately, we pray to God a lot. That is the time, unfortunately, we pray a lot to our inner self, to our higher soul, या हम लोग बहुत ज़्यादा अपने inner light से ज़्यादा connect करते हैं. So when we connect more, then something gets downloaded and it opens a new door, it opens a new horizon, it opens a new way for the same thing to be achieved. So whenever you're feeling stuck, या आपको लग रहा है कि आप एकदम stuck हैं और कुछ रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, and you're feeling worthless, you're feeling hopeless, and you're feeling कि कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है, this is the time, remind yourself to be like water.
to be like water which flows constantly and which doesn't get stuck. आपको यही याद दिलाना है अपने आप को कि एक दरवाजा stuck हुआ है, let me find another door. दूसरा भी stuck हो सकता है, let me find another door. So this is one way where we can practically practice trying and not giving up and not losing hope and keep on trying. Now जब हम लोग ट्राई करते हैं, अगर अंदर में यही इमोशन रखेंगे कि अरे कुछ भी नहीं होने वाला है, nothing is going to happen, मेरा तो बहुत खराब है, मेरा तो सब चीज गड़बड़ है, so these thoughts are dangerous thoughts and we have to really drop these thoughts and let go of these thoughts, okay, and have the thought of hope. इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं, मास्टर ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन में भी बोलते हैं wherever there is despair, hope. So whenever we are in the moments of despair, temporarily, हो सकता है कि रास्ता भी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, but temporarily give yourself little patience, little time that yes, something will open up for me. Something is opening up for me. Have faith and have hope and have that feeling that yes, something is happening, and give it little time, little patience, little perseverance, and then you will see that something will really come up. Okay, so this reminds me of a very good story. This story is this, like for example, because we are all in this lockdown phase, I'm sure many of us get stuck. हम लोग का कभी कभी हमारे पास extra time है, we don't know what to do, and there have been lot of stories of many successful people कि जब उन लोग के पास कुछ करने के लिए था नहीं, and they lost hope and they lost everything, and then they just did what came their way, and that turned out to be the most successful thing. Like for example, Steve Jobs. Steve Jobs का भी एक example है जहाँ पर he was just relaxed and he just offhand कुछ था नहीं करने के लिए, he just went and attended a calligraphy class, and the calligraphy font which Steve Jobs brought into Apple became one of the most successful designs. So this is an example where the despair was turned into hope. Okay, so there are many ways like this where people are into immense despair, where nothing shines. But at that moment, if you retain your inner stillness, your inner calmness, and if you keep on praying for the energy of hope, and you keep on having that feeling inside that it's okay, something will happen. Now, another way to do it is make sure that this moment you are also generating good karma. If you keep on doing some good deeds, even in the weakest moments, this good karma will help you to attract something which will help you come out of the stuck feeling. तो वो stuck feeling से बाहर निकलने के लिए sometimes we need good karma. इसीलिए जब भी आपके पास समय हो, make sure that you're blessing people, you're healing people, you're doing your twin hearts meditation regularly, or finding ways and opportunities to help people, because this will also help you to come out of that despair which is keeping you or making you feel extremely stuck. Okay, so with this I would like to close for today. So remember, wherever there is despair, hope. जब भी despair की feeling आती है, उसको transform करना है hope से, by telling yourself that only one door is closed. दूसरा डोर ओपन हो सकता है, पूरा वर्ल्ड क्लोज नहीं हुआ है, बस एक ही रास्ता क्लोज हुआ है, दूसरा रास्ता खुल सकता है. So open up your mind, let your mind enlarge, and let your mind see something that which you are not being able to see as of now. So whenever you feel despair, remind yourself that only one door is closed. Let me find out another way to solve the same problem and to come out of this. Okay, so thank you very much for joining in. Have a nice day, and let's stay strong, and let's stay absolutely hopeful about our future, about any circumstances that we might be going through. Thank you very much.